credits theory, 2 credits practical, total 6 credits का course है ये. So total marks will be 150. 100 theory and 50 practical. 150 marks का ये total subject है. Okay. Then you have 10. Sorry, this is for this is IT. Yes, our will be this. Now, total 150 marks का होगा, चाहे CE हो, IT हो या CSE हो, ठीक है? Credits will be same, but the syllabus will be different in CE, CS and IT. So in CE and CSE, we have all these chapters. Okay, so first chapter, the part saying sir will be covering the first chapter in your class. What is an operating system, evolution of operating system, its services, types of operating system, concepts of OS and different views of OS. Okay, so that is an introduction part that you also can read from any source, book or internet. That this first chapter is very basic. Okay. Then we have process management. So process management, from process chapter, second chapter, I will be starting the second chapter. Okay. Once you complete the basic things about OS, in the next week we will start this process. Okay. Then because I have only one lecture in your class, like in 1 week I will be having one lecture in your class. Okay. So and Parsing sir will be having 2 lectures in your class. Okay. Sir has joined our institute in few months back only. So he will be taking 2 lectures in your class. I will be taking 1 lecture. I will start from second chapter. So once you know the theory, basics of OS, we can start from process. That is second chapter. Okay. Now. Yes, so pedagogy, let me teaching scheme. So this is, we have decided this pedagogy this time. So that this I told you, it will be of 150 marks. Okay. Then for theory component, we will have unit test 1. It will be of 30 marks, but the actual, but it will be converted into 10 marks at the end. Then unit test 2, 10 marks. Okay. Then there will be an assignment of 5 marks, and then there will be quiz. Okay. Weightage 5 marks. So now it depends कि quiz जो है that will be taken how many times. It will depend on teacher. Like suppose I am taking my other subject. I am taking chapter wise quiz. Okay, so at the end it will get average. ठीक है, so chapter wise भी हो सकता है और in 15 days or once in a month और इस टाइप से. ठीक है, so that I will decide. I can take 2 chapters. After 2 chapters, I can take quiz. Okay. So या तो जितना course या फिर in whole semester I can take 2 or 3 times your quiz. Okay. So it has weightage of 5 marks at the end. Okay. So chapter wise लेने से क्या फायदा है, आपका chapter का preparation भी हो जाएगा if you want to seriously take it. Okay. So this is the pedagogy for theory. Okay. Out of 30 marks. Now internal practical component out of 30. So you will have report के 5 marks. Then project के 5 marks. Then also we can change this practical component if we feel that we should in between the semester, because we were discussing yesterday that we should keep project of 10 marks. Okay. So because it is a practical project है, तो project का ज़्यादा weightage रहे तो ज़्यादा अच्छा है. Okay. For your practical knowledge. So let's see what is decided finally. Then internal practical exam. So एक internal practical exam होगी, that is kept here 10 marks. Okay. Then online course of 5 marks and group presentation of 5 marks.
तो इस तरीके से ये इंटरनल प्रैक्टिकल कंपोनेंट जो है आपका वो डिवाइडेड। ओके, देन यस ऑफ कोर्स यहाँ पे वो ऑनलाइन कोर्सेज के लिंक्स दे रखे हैं, दैट आई विल शेयर विद यू, जो आपको यहाँ आपको कंप्लीट करना है टू गेन 5 मार्क्स। ओके, तो कोर्स एरा के हैं, यूडासिटी के हैं, एनपीटेल के हैं, स्वयं के भी हैं, राइट। Okay, then these are topics behind syllabus. If we that is for self study, but we'll discuss if we have time at the end of semester about these topics. Okay, तो ये हमारी pedagogy है। Now practical list. Yes, so this is our practical list. So first जो है that is what is Linux architecture? So you have to study Linux architecture, types of operating system वो आप पहले चैप्टर में पढ़ ही लोगे, flavors of Linux, Unix, Mac, Windows, etc. And what is the difference between Lollipop and Marshmallow operating system versions? ठीक है, so what are the differences between various versions of operating systems? ठीक है, तो ये हम first practical that you have to do it by yourself. From the second practical, we will study these Unix commands. Okay, so what is man, help, mkdir, rmdir. आपकी operating system first time आया है or this is advanced? This is the first time. This is the first time. Okay, because earlier it was in 4th semester. तो अभी उसको आई थिंक 5th सेमेस्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम को शिफ्ट कर दिया है एंड उसका सिलेबस थोड़ा एडवांस कर दिया है। तो ऑल दीज आर यूनिक्स कमांड्स, लिनक्स कमांड्स वी विल स्टडी। देन यू हैव टू क्रिएट प्रोग्राम्स इन शेल स्क्रिप्टिंग। ओके, सो जैसे हेलो, फर्स्ट प्रोग्राम इज ऑलवेज ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप सी भी पढ़ा होगा तो आपने हेलो बनाया होगा, ठीक है। तो हेलो प्रोग्राम, देन फिबोनाची सीरीज है, then write a shell script which takes one number from user and finds the factorial of the given number. So you know the Fibonacci series, factorial, how to find the factorial of the number. तो आप लोगों को concepts clear है, आप लोगों को सिर्फ क्या change हुआ है लैंग्वेज। ओके, आपने C++, जावा में अभी तक किया होगा, वही चीज हमें अब शेल स्क्रिप्टिंग में करनी है, ठीक है। Then file programming भी आप लोगों ने पढ़ी है। We have to do it here in Linux. Write a program that spreads over 2 files using makefile. You have to do all these things, ठीक है। तो फाइल प्रोग्रामिंग भी है। Then from 5th ये जो चीजें हैं ये एडवांस जो है ऐड हुई है। This what is fork, तो ये जो प्रोसेस है उसमें आते हैं। जो हम प्रोसेस चैप्टर पढ़ेंगे उसमें थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ेंगे। What is fork? फॉर्क के प्रोग्राम होते हैं Excel, get, PID, all these are functions that you are going to use, ठीक है। Then ये कुछ शेड्यूलिंग्स हैं, ये भी आप पढ़ोगे थ्योरी में, चैप्टर्स में, जब आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा। सेम थिंग यू हैव टू इम्प्लीमेंट इन लैब। Then again there are some other programs using fork, zombie and all those programs that I will tell you. Thread management using I और जो भी लैब टीचर है आपका वो आपको बताएगा। ओके, थ्रेड मैनेजमेंट यूजिंग पी थ्रेड लाइब्रेरी। सो थ्रेड मैनेजमेंट जावा में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, यहाँ पे भी होता है सेम चीज, ठीक है। देन व्हाट आर सेमाफोर्स, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशंस, ठीक है, ये सब चीजें हैं आप लोगों का। सो दिस एक्चुअली लेट मी टेल यू, ये आप लोगों का जो 5th, देन 7th, देन 8th, 9th एंड अप टू 13, ठीक है। 12th हटा दो, 12th और 6th, 12th और 6th के अलावा 5 से लेके 13 तक पहले ये सब मास्टर्स में करवाया जाता था, प्रैक्टिकल्स एमटेक में। तो वो जो एडवांस चीज थी जो मास्टर्स में करवाई जाती थी वो अब आप लोगों के बीटेक में ही ऐड कर दी। तो वो जो एडवांस चीजें हैं, टॉपिक्स जो है वो ऐड हुई है आपके सिलेबस में एज वेल एज प्रैक्टिकल में। That's why I think ये जो सब्जेक्ट है वो 4th सेमेस्टर से 5th सेमेस्टर में शिफ्ट कर दिया। So you are going to learn basic as well as advanced things.
ठीक है, ये सब चीजें पहले मास्टर्स में आया करती थी। ठीक है, मैंने एमटेक में पढ़ाया था ये सब। तो ये दिस इज ऑल अबाउट योर ऑपरेटिंग सिस्टम। आप लोगों को कुछ है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर टूडेज टास्क you have to learn about this Linux architecture, types of operating systems, Linux, Unix and all, then flavors of Linux, Unix and difference between the various versions of operating system. तो इतना आप पढ़ो because this is your self study topic. Then as I said, when your first chapter will complete, we'll start from second chapter so that आप लोगों को ऐसा ना लगे कि ये एकदम से हमने एडवांस चीज स्टार्ट कर दी। ओके, सो फर्स्ट बेसिक्स थोड़ा हो जाए ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका इस वीक में, देन फ्रॉम सेकेंड वीक वी विल स्टार्ट योर सेकेंड चैप्टर। ओके, एनी डाउट्स? तो आई एम शेयरिंग दिस सिलेबस, प्रैक्टिकल लिस्ट एंड एवरीथिंग यहाँ टीम्स में ही मैं शेयर कर देती हूँ। So that you can take it from here. Was my screen visible? Practical list तक जो मैंने समझाया वो सब? Yes, ma'am. Okay. टीचिंग स्कीम मैंने अपलोड कर दी है, अभी हो जाएगी कुछ ही सेकंड्स में अपलोड। देन प्रैक्टिकल लिस्ट में अपलोड कर देती हूँ एंड सिलेबस। प्लीज चेक। Yes, ma'am. We got it. ओके, पेडागोजी भी कर देती हूँ अपलोड। पेडागोजी एक्चुअली लाइक आई सेड एक बार डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर द फाइनल वेटेजेस, देन मैं अपलोड करती हूँ। ओके, सो वी आर प्रोजेक्ट के मे बी शायद मार्क्स हम बढ़ाए तो उसके बाद ही ऐड करती हूँ। सो यू हैव योर प्रैक्टिकल लिस्ट एंड सिलेबस, so today you just go with
the Linux operating, what is Linux architecture, and different flavors and versions of operating system. Okay. So if you have any doubt, you can ask me, else we can end the session today here. Okay, then we can you can leave.